Hello and welcome to Arunachal Mirror. So right now there is a training of community volunteers. More than 160 participants have come here from all the districts of Arunachal Pradesh on the training program on the disaster response under the upscaling of the AAPDA Mitra scheme that is being organized by the National Disaster Management Authority of Government of India. So let's have a look on this training program. ये एक फोम है, एक झाग निकलता है। ये फिर ऑयल से लाइटर है, तो हल्का है तो ऊपर जाके ब्लैंकेटिंग करता है। इस मेथड को क्या बोलते हैं? स्मूथरिंग मेथड। दिस इज द स्मूथरिंग मेथड। मेरा नाम ब्रिजेश जायसवाल है। मैं NDMA प्रोजेक्ट ऑफिसर हूँ, प्रोजेक्ट नोडल ऑफिसर, जो आपदा मित्र देख रहा हूँ। ये जो आपदा मित्र स्कीम है उसके बारे में आप व्यूअर्स लोगों को कुछ बताना चाहोगे, कुछ उसे अंडरस्टैंडिंग। ये जो स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2016 में पायलट बेसिस पे शुरू किया था, जिसमें हमने 25 स्टेट और 30 डिस्ट्रिक्ट को रखा था। बेसिक मोटिव ये स्कीम का था फ्लड रिस्पॉन्स के लिए वॉलंटियर को रेडी करना, जिसमें हमने 25 स्टेट और जो 30 डिस्ट्रिक्ट है उसमें 200 वॉलंटियर पर डिस्ट्रिक्ट हमने रखा था। इसके बाद क्या हुआ, जो ये वॉलंटियर है इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया पायलट स्कीम पे। फॉर एग्जांपल हम केरला फ्लड की बात करें, कोल्हापुर महाराष्ट्र में कोल्हापुर फ्लड की बात करें, ये वॉलंटियर ने लोगों को लाइफ सेविंग काफ़ी अच्छा किया। गोरखपुर में जब नाव दुर्घटना हुई, बोट पलटी, तो लोगों को नाव उससे बचाया, वॉलंटियर 35 वॉलंटियर को बचाया। आप हरिद्वार उत्तराखंड में सुने होंगे, वहाँ हर साल कांवड़ यात्रा होती है। उन कांवड़ यात्रियों को गंगा नदी में डूबने से वॉलंटियर ने बचाया। और आगे हम बात करें कोविड मैनेजमेंट को लेकर, हमने वॉलंटियर को कोविड का कोई ट्रेनिंग नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने जो अवेयरनेस होते हैं कोविड के लिए, मास्क कैसे लगाना है, हाथ को सैनिटाइज कैसे करना है, तो ये सारी बेसिक चीज़ें लोगों को वो घर घर जाके राशन बांटना, ये सब सारे काम किया। जब ये स्कीम ख़त्म हुआ और चल रहा था तो बहुत सारे स्टेट ने हमें रिक्वेस्ट किया कि इस स्कीम को अपस्केल करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। फिर हमने क्या किया, इस जो स्टेट अथॉरिटीज़ ने हमें रिक्वेस्ट किया, उसके बाद हम इस स्कीम को अपस्केल किए 350 डिस्ट्रिक्ट में टू ट्रेन 1 लाख वॉलंटियर। जब ट्रेनिंग हमने दिया इनको, 1 लाख वॉलंटियर ट्रेनिंग जो अभी चल रही है बहुत सारे स्टेट में, और हमने सिर्फ इसको 1 हज़ार पे नहीं रखा, इसको हमने मल्टी हज़ार पे शुरू किया। जैसे हमने इस पर फ्लड भी रखा है, साइक्लोन भी रखा है, लैंडस्लाइड भी है, अर्थक्वेक भी है। तो अब सारे स्टेट के अलग अलग ज्योग्राफी है, वहाँ अलग अलग डिजास्टर होते हैं। फॉर एग्जांपल हम अरुणाचल की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, यहाँ पर लैंडस्लाइड की भी इशूज़ है, यहाँ पर अर्थक्वेक की भी इशूज़ है, यहाँ पर अवलांचेज की भी इशूज़ है। तो हमने इसको मल्टी हज़ार पे किया, और इसको करने के बाद अभी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें सारे स्टेट से मिल रहे हैं। वॉलंटियर की ट्रेनिंग शुरू भी हो गई है, हम स्टेट विजिट करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, तो रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिल रहा है। तो बाकी हमारा आपदा मित्र स्कीम है। हमारे डिस्ट्रिक्ट्स पर बहुत ही कम है फायर सर्विस का, जो है कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में है ही नहीं है।
तो आप नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट के तरफ से कुछ प्रपोजल है क्या स्टेट पे डिस्ट्रिक्ट्स पे लेकर आने के? नहीं मैम, ये मेरा सब्जेक्ट ऑफ मैटर नहीं है, इसमें मैं डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि ये अलग डिपार्टमेंट है, अलग देखते हैं। मैं NDMA से हूँ, मैं जो आपदा मित्रा के लिए मैं काम कर रहा हूँ, तो इस पर मेरा पास इसमें कोई आंसर मेरे पास नहीं है। तो आप सर सजेशन भी नहीं दे पाओगे? नहीं मैम, जैसे भी आपदा मित्र आपके तैयार हो रहे हैं, इनको जो फायर सिखाया जाता है, इनको लोकल कम्युनिटी पर आप लगाइए। और कोई फायर होता है, ये बच्चे जो ट्रेंड हो रहे हैं, हमारे जो बच्चे ट्रेंड हो रहे हैं आपदा मित्र के लिए, इनको स्कूल्स में जाए, बच्चों को बताए, लोकल लोगों को बताए आग कैसे बुझाना, जैसे अपने हमें दिखाया, इसको अगर कम्युनिटी लेवल पर ले जाते हैं तो भी हम बहुतों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा है मैम, सजेशन है। सर ये ट्रेनर्स लोगों को अभी जो है जॉब प्लेसमेंट मैम इस पे जॉब का तो हम कमिट नहीं कर सकते हम लोग। ये जो वॉलंटियर, अगर मैम हम बच्चों को कुछ पैसे देते तो वॉलंटियर मीनिंग ख़त्म हो जाता है मैम। वॉलंटियर में होता है सेल्फ सर्विस होता है, आप कैसे सोसाइटी की सर्विस दे रहे हो। और दूसरी चीज़ मैम, हमने वॉलंटियर के लिए इंश्योरेंस प्रोविज़न रखा है 3 इयर्स का, 5 लाख का है, तो हम वॉलंटियर को आगे देंगे, तो इंश्योरेंस प्रोविज़न है मैम। आप कुछ लास्टली कुछ कहना चाहोगे? मैम मैं सभी को व्यूअर्स के थैंक्स। तो अरुणाचल प्रदेश अच्छा काम कर रहा है, अच्छी ट्रेनिंग दे रही है। मैं सभी लोगों से बोलना चाहूँगा कि बेसिक डिजास्टर सभी को आनी चाहिए। डिजास्टर होता क्या है, इससे बचना कैसे है। तो मैं सभी व्यूअर्स को यही बोलना चाहूँगा कि जो बच्चे दूर दूर गांव से, डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, जो उनकी फैमिली है, सभी समझे डिजास्टर क्या होता है। अगर आप अपने नेबर और खुद की फैमिली को ही बचा लेते हो तो हमारा ये अचीवमेंट जो आपदा मित्रा का जो स्कीम है, ये हमारे लिए फुलफिल हो जाएगा। थैंक यू सो मच। ओके, मेरा नाम जोगा मांगू है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफिसर हूँ हेडक्वार्टर का, और आपदा मित्रा का ट्रेनिंग इंचार्ज हुआ अभी। जो आज ट्रेनिंग जो चला है, आप उसके बारे में बता पाएंगे? कितने सारे वॉलंटियर्स आए हैं यहाँ पे और कैसा चला है इसका ट्रेनिंग प्रोग्राम? कि अभी हमारा टोटल अरुणाचल का 11 डिस्ट्रिक्ट से लिया गया है, तो अभी ये 4th बैच चल रहा है। तो अभी तक हम लोगों ने 136 वॉलंटियर्स ट्रेन कर चुका है, तो ये नेक्स्ट ईयर तक जाएगा, फरवरी तक। और आगे जाके वॉलंटियर्स लोग जो आपके ट्रेनिंग सेशन होता है और भी आगे होगा क्या? कब होगा ये? आप जो व्यूअर्स लोग जो इंटरेस्टेड है उसको आप बताएं। वैसे हमारा कम्युनिटी वॉलंटियर्स ट्रेनिंग लास्ट टाइम भी हुआ था, और ये जो चल रहा है अभी ये आपदा मित्रा है। और अगर गवर्नमेंट इस प्रोग्राम से खुश है और इसका अगर ये सक्सेस होता है तो शायद NDMA डिसीजन लेगा कि इसको अपस्किल और करेगा। अभी फ़िलहाल 11 डिस्ट्रिक्ट तक है, तो शायद कल को जाके ये और आगे जाएगा, जो बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी होगा। शायद वो कमेंट हम लोग नहीं कर सकते, लेकिन इट्स डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कुछ अपील या कुछ सजेशन देना चाहोगे? क्योंकि अभी देखा जाए तो डिज़ास्टर का जो फायर हो गया, कुछ भी अभी वो है ही नहीं डिस्ट्रिक्ट में, कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं है फायर सर्विस के लिए डिपार्टमेंट में। तो आप एज ए नोडल ऑफिसर आप कुछ अपील करना चाहोगे? वही रिक्वेस्ट सभी डिप्टी कमिश्नर्स और DDMO से है। DDMO तो अपना काम कर ही रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है वॉलंटियर्स को जुगाड़ करने में। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमको वॉलंटियर्स नहीं मिलता है। बहुत सारा वॉलंटियर्स का कहना, वॉलंटियर्स जब ये बात आता है तो हर काम वॉलंटियरली करना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ में एक प्रॉब्लम ये है कि जब ट्रेनिंग होगा तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, हमको नौकरी मिलेगा क्या, उस में बात में आ जाता है। तो उसका वजह से कभी कभी डिस्करेजमेंट इस बात का होता है कि हमको जो हमारा टारगेट है वो नहीं होता है, मतलब नहीं आता है इतना वॉलंटियर जितना हम एक्सपेक्ट करता है। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट से मेरा 50 का टारगेट रखा है, तो वो कभी कभी नहीं आता है, बिकॉज दे पूछता है कि हमको क्या फ़ायदा है। तो शायद हम लोग ग्राउंड लेवल में इस चीज़ को हम लोग मोटिवेट कर पाएगा इन लोगों को। तो शायद जितना वॉलंटियर्स जितना आएगा, जितना ट्रेंड होगा, उतना शायद हम डिज़ास्टर को रिस्पॉन्स क्विकली कर पाएगा। इसमें वही इनको हम लोग हर लेवल में हम लोग इनको ये करना पड़ेगा, इनकरेज करना पड़ेगा। तो इसमें लास्टली तो ये है, सबसे रिक्वेस्ट है जहाँ जहाँ में ये जो डिस्ट्रिक्ट है आपदा का, और आपदा मित्रा डिस्ट्रिक्ट को, नॉन आपदा मित्रा को भी सबसे रिक्वेस्ट है कि इस तरह का जब ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा सब इंटरेस्ट का साथ में लेने से बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ये हम लोग का सोसाइटी के लिए है। एंड सब आपदा वॉलंटियर्स जो है, आपदा मित्रा वॉलंटियर्स जो है, वो आई थिंक दे शुड हेड द सोसाइटी, क्योंकि दैट वे एटलीस्ट हम लोग कहीं ना कहीं हम लोग जैसे भी करके बहुत अचीवमेंट कर लेगा। क्योंकि इस बार हम लोग देखा है कि हम लोग का आपदा मित्रा वॉलंटियर्स ने काम किया है, जैसे हमारा DDMO ईटानगर का बताया है, उन लोग का बहुत बड़ा योगदान था। इस तरह से सब डिस्ट्रिक्ट्स में होगा तो एटलीस्ट हमारा वो बहुत बड़ा एसेट हो जाएगा। AAPDA Mitra is a scheme. It's a program by the Government of India, National Disaster Management Authority. AAPDA Mitra means the friends
during the times of disaster. आपदा मतलब है disaster का, then Mitra. This is carried out all over the country, and then we are also part of that. 3 years back, Lohit was selected, one district was selected, and then we had carried out the training. This year, they have selected 11 districts from Arunachal, and the training has commenced. Till now, 3 districts we have completed, and from each district we are expecting 100 volunteers. Today, if you have gone there, you must have seen National Coordinator also has come, and we are training in all the aspects, the fire, the earthquake, in the case of earthquake, in the case of fire, in the case of the flood, in case if someone gets drowned. So all aspects are there. And these AAPDA Mitra trainees, volunteers will be the people who will be there on ground. They will be the first responders. Any disaster takes place around their district, they will be the first to respond. We are trying to equip them, not only in materials, but with training, mostly with the training, how to handle. Even the first aid is also, given to them. Means training on the first aid, how to provide. Oh, that's it. So on the recent days, there has been landslide, fire. So how is the disaster management doing awareness for the people, for precautions and all? How is the disaster management department doing awareness? See, we just at the start, means I should say from April, long before the monsoon sets in, we have already issued the instruction to all the district administration with a detailed instruction how to go about, how to prepare for the monsoon. And then and at the district level, District Disaster Management Authority chaired by the DC, they have carried out the meetings. We are fully prepared. But then disaster means disaster. It can occur anywhere. So we try to prevent, but then we also focus on how to respond. So it's more about responding, because we really do not know from which angle the disaster will strike and which place the rain will fall, which place the hills will fall. So we train on the response side. This time also it occurred early and it occurred heavy. You must have seen across the state, especially in Itanagar, we have had quite a number of places landslides, and unfortunately we have lost 8 people across the state. Out of that 8, 5 are from the state capital. On the day of the occurrence, when it happened on near the Punjabi Dhaba, the first responders were our department, our district disaster management order. As soon as we got the information, we activated, our SEOC is actually already activated, our people went there. The moment we got the information came, we were the first to come, our disaster people. And then AAPDA trained, interestingly, it was the AAPDA trained volunteer who informed us. See, he had just attended the training, and and then from there until the time we recovered the 5th body, our people were there. We also went, my advisor went, all the officers, we went there, and our DDMO was there 24/7. The Jolang area also, we have been there. Our people have been helping out. Mainly as a disaster department in itself doesn't have the manpower. But we played a crucial role of coordinating all the rescue as responding departments. It could be medical, the fire, the police, the SDRF, the NDRF, district administration, the PWD, even there's like a forklift and JCB, the earth movers. That resources we have been mobilizing. So as we see in this AAPDA Mitra program, there are very youth students. They are volunteering for this. So is there any job placement for all these volunteers, since they are very interested and this is a service to the people?
So is there any job placement or any benefit to the volunteers? As such, in the scheme, we really don't have a after training job for them, regular job. Basically, this training is meant that on the ground, the people who are there should be prepared how to respond to the disaster. However, the AAPDA Mitra volunteers, whenever any disaster takes place anywhere, we use them, and then as and when how we use them, if there is any remuneration, we will be paying them up. Okay. Or maybe it could be like in the times to come, like in many other states, they have been having every district they have a district say emergency operations center, and then district forces are there in case if we need them, either in a contract basis or in a whatever basis, we may be able to use them there for our any disaster response activities. रिसेंटली अभी बहुत लैंडस्लाइड्स हो रहे पहले मैंने कहा था जैसे डिजास्टर्स का तो आप लोगों को कुछ एडवाइस देना चाहोगे सजेशंस देना चाहोगे? See, it's like that. We have been circulating radio jingles, and then we have prepared a media also on about how to face the flood situation, how to face the landslides, the hillocks are falling, during the earthquake, during the fire, how we should respond. That is there. So different aspects are there. For the earthquake also, we have been carrying out exercises, mock exercises at the schools and also with the panchayat leaders. So my advice would be all of you be very careful, especially during the monsoon. Don't stay near the vulnerable areas where the flooding will occur or the landslides will occur. And the another unfortunate thing which is so frequently coming to the news is fire accidents. So I'd like to request every one of our people to be careful with their wiring, electric wiring, because most of the fire accidents are traced to the electric wiring, faulty electric wiring. And then from the kitchen cylinder and all, that is also a very, one of the most the source from which the fire accidents happen. So I'll request everyone to be careful in their life.